Assalamu alaikum. The topic for our lecture today is the legal system of Pakistan. Our legal system of Pakistan में today we will be looking at the loopholes which exist in this and the system. जब हम बात करते हैं legal system of Pakistan की तो it is a mixture of principles of common law, Islamic law और ये बेसिकली जो है हमने कुछ जो कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स हैं या कुछ जो लेजिस्लेशंस हैं वो हमने ब्रिटिश इंडिया से लिए हैं और फिर इस्लामिक लॉ हमने शरीयत से उठाया है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ कंसिडर किया जाता है जो कि बेसिकली आपके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है और जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट है उसको गवर्न करता है। और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो डिफरेंट हायरार्कीज पे बेस करता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट्स हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हो गए। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेटअप है ये जो कि डिफरेंट कॉमन लॉ प्रिंसिपल एंड इक्विटी के प्रिंसिपल्स और फिर शरीयत के प्रिंसिपल्स पर चलता है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डिले जो है हमारा बहुत बड़ा एक इशू है। इसी तरह लिमिटेड एक्सेस जो है इस इन कुछ वजूहात की वजह से और जो हम आगे पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स उनकी वजह से होता ये है कि लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं सिस्टम में, जिसकी वजह से जो पार्टी है कुछ पार्टीज जो हैं उसका नाजायज फायदा भी उठाती हैं। जब हम लूप होल की बात करते हैं तो कि लूप होल होता क्या है, तो वो बेसिकली कुछ गैप्स और वीकनेसेस होते हैं जो कि बेसिकली इंडिविजुअल्स या एंटिटीज को दे अलाउ देम टू एक्सप्लॉइट या बाईपास द लॉ। अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई सच लूप होल्स और हाउ डू वी एड्रेस सच लूप होल्स? तो आइडेंटिफिकेशन तो तब होती है जबकि एक ऑनगोइंग हमें मतलब कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द प्रोग्रेस दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, तो हम अगर जो है एग्जिस्टिंग लॉज और रेगुलेशंस को हम थरली जो है एग्जामिन किया जाए और जो लीगल एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स हैं, क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनका वन टू वन इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, वो ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं लॉ मेकर्स को कि किस तरह कहाँ पे लूपहोल एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे जो है पार्टीज को नुकसान हो रहा है। तो एक ऑनगोइंग जो एफर्ट होती है वही आपके सिस्टम को जो है रोबस्ट बनाती है। तो जो स्टेक होल्डर्स या लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशन, उनके साथ कंसल्टेशन, उनकी जो इनसाइट्स है, उसके बाद आप जब लॉ को स्ट्रेंथन करते हो, आप उनको एग्जामिन करते हो, अमेंडमेंट्स लेके आते हो, क्लैरिफिकेशंस लाते हो एम्बिगुअस लैंग्वेजेस पे लॉ के, न्यू लॉ और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो तब जो है ये लूप होल्स जो हैं टैकल हो सकते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लूप होल्स जो पाकिस्तानी सिस्टम में राइट नाउ एग्जिस्ट करते हैं। The first one, which is a very major problem in our country's tax evasion, क्योंकि हमारा एक एम्बिगुअस टैक्स रेगुलेशन है, नॉनदलेस कि हम लोगों ने रिफॉर्म्स जो है पास हुए हैं इन रिसेंट इयर्स अबाउट टैक्स, लेकिन स्टिल टैक्स evasion इज अ प्रॉब्लम। जो इंडिविजुअल्स जो बिजनेस हैं दे एक्सप्लॉइट द लॉ। तो जो बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स होते हैं, दे ट्राई टू एवेड देयर शेयर ऑफ टैक्सेस, और ये ऑफशोर कंपनीज बनाकर अंडर रिपोर्टेड इनकम, और बेसिकली दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टैक्स रेगुलेशंस। सेकंड वन इज लैंड इंक्रोचमेंट। लैंड एक्विजिशन एंड ओनरशिप के लॉज, जब देयर आर फ्यू वीकनेसेस जिसकी वजह से there are individuals or there are mafia groups that exploit these laws and they occupy land without any authorization or proper documentation. Another huge problem is corruption. जब आप क्योंकि हमारे एंटी करप्शन लॉज और उनकी इन्फोर्समेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से डिफरेंट करप्शन की प्रैक्टिसेस जो हैं हमारे फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल देखी जाती हैं। ब्राइबरी हो गई, एम्बेजलमेंट होगी, अब्यूज ऑफ पावर, डिफरेंट। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमने देखा है कि आपके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स जो हैं कॉपी किए जाते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वहां पर ये जो है फाइनेंशियल लॉस क्रिएट करते हैं उन लोगों पे जिनके ओरिजिनल जो है
कॉपीराइट जिनका एक्चुअल में बनता है, जिनके पेटेंट्स होते हैं। इसी तरह साइबर क्राइम में भी हैकर्स, स्कैमर्स, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो जो है इलीगल एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, फिशिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो ये लूप होल्स जो है बेसिकली जब केसेस कोर्ट्स में आते हैं और उनकी स्टडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये वीकनेस है लॉ में, और इसकी वजह से जो है ये कुछ पार्टीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी पार्टी जो है एडवांटेज ले रही है। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स की क्या वजह है कि लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या वजह है कि वीकनेसेस जो है लॉ में एग्जिस्ट करती हैं। तो सम ऑफ द फैक्टर्स, फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि जो वेग लैंग्वेज ऑफ लॉ होती है कुछ लॉज में, स्पेशली द लॉज जो कि हमने अडॉप्ट किए हुए हैं ब्रिटिश इंडिया से, उसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वेग वर्ड्स होते हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन नहीं सही हुई होती, या फिर वो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो रूम ही नहीं दे रहे होते इंटरप्रिटेशन को। इवन दो द प्रेसिडेंट्स वहां पर डिफरेंट प्रेसिडेंट्स में उनकी इंटरप्रिटेशन हुई भी होती है, लेकिन ड्यू टू इनकंसिस्टेंट प्रेसिडेंट्स या ड्यू टू इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन वो क्रिएट करते हैं एक मिस इंफॉर्मेशन, या फिर मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, एक जरिया देते हैं या एंटिटीज को कि वो मैनिपुलेट कर सकें लॉ को। The second one is, excuse me, please mute yourself. The second one is inadequate legislative oversight. Second factor that results or contributes in creating loopholes or weaknesses is inadequate legislative oversight. जहां पर लैक ऑफ थोड़ा एग्जामिनेशन होती है केसेस में और रश डिसीजंस होते हैं, वहां पर गैप्स हो जाते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज अकर कर सकते हैं जिसकी वजह से पार्टीज एक्सप्लॉइट कर सकती हैं लॉ को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है एक फैक्टर कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग फास्ट और हम जब उससे पेस अप नहीं कर सकते, जब हमारी कंट्री में उस के अकॉर्डिंग लॉज नहीं जो है अमेंड हो रहे, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली लॉज नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर क्राइम्स, तो जिस तरह विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्राइम्स जो है, डिफरेंट न्यू क्राइम्स जो है वो हमें नजर आते हैं। अगर उसको टैकल करने के लिए न्यू लेजिस्लेशंस नहीं आएंगी तो उसकी वजह से जो एक पार्टी है वो नुकसान में रहेगी, और जो दूसरी पार्टी जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि क्रिमिनल्स हैं, वो उसका हमेशा एडवांटेज उठाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एनफोर्समेंट, हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे एनफोर्समेंट जो लोग हैं वो इतनी उनकी लैक ऑफ रिसोर्सेज है, फंडिंग, पर्सनल या टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो लॉ को इन्फोर्स उस तरह नहीं कर पाते, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं होती। इसकी वजह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर अनफेयर कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। देन वी कैन से कि करप्शन एंड इन्फ्लुएंस जो है एक और फैक्टर है। करप्शन जबकि विद इन द लीगल सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से डिफरेंट वीकनेसेस आपके लीगल सिस्टम में खुद ही डेवलप हो जाती हैं। और इंडिविजुअल जो कि पावर में होते हैं, या फिर ड्यू टू करप्शन पावर ऑफ या इन्फ्लुएंस की वजह से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो लॉ को। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ केस जहाँ पर एक पार्टी जो है इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड द अदर इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, तो करप्शन या इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरी पार्टी हमेशा नुकसान में ही रहेगी। Another one is the complexity of laws.
लॉज क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्वोल्यूटेड हैं, जिसकी वजह से जो है जो क्रिमिनल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो उस चीज का नाजायज फायदा उठा सकें। जब लॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं एक कॉमन पर्सन के लिए, जब इजी टू कन्वे लॉज नहीं होते, उनके लिए फिर उनको अवेयरनेस नहीं होती ना, वो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उनको उस चीज की समझ ही नहीं आ रही होती कि ये किस तरह मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो लेजिस्लेशन है हाउ विल इट हेल्प मी। Lack of public awareness again, कि the general public is not aware of how they can protect their rights or how they have to protect. For example, when we talk about online banking frauds that exist, the people do not know that अगर कोई कॉल आ रही है बैंक से, या अगर कोई, बिकॉज बैंक से कभी भी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पेन क्या है, तो क्योंकि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, तो जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको सब, फॉर एग्जाम्पल एन इनलिटरेट पर्सन जिसको नहीं इतना पता कि जो है बैंक से कभी पिन वगैरह या कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा, तो वो अक्सर जो है ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं। लॉबिंग एंड स्पेशल इंटरेस्ट, जहाँ पे पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ मेकर्स के, एक कोई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है, वो अगर लॉबिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी लॉज में अफेक्ट पड़ता है, कि वो अपने जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स हैं उनको फेवर करते हैं, जिसकी वजह से दूसरी जो जो नहीं इतने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हार्म में ही रहती हैं। देन देयर इज कि लेजिस्लेटिव इनर्शिया, क्योंकि आउटडेटेड ऑब्सलीट लॉज हैं जो कि नहीं सोसाइटल चेंजेस या फिर जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनसे पेस अप नहीं कर पाते, उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिटवीन द आउटडेटेड लॉज एंड द न्यू एडवांसमेंट। अब इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि जब लूप होल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जब लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द लॉ होता है वो आपका जो है अंडरमाइन हो जाता है, और जिसकी वजह से अनफेयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो है सर्टेन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स को मिल सकते हैं। इनएक्विटेबल जो है आप ट्रीटमेंट जो है लूप होल्स कैन रिजल्ट इनटू इन अनइक्वल ट्रीटमेंट। हर, क्योंकि लॉ इज एवरीवन इज इक्वल इन इन फ्रंट ऑफ द लॉ, तो अगर तो लूप होल एग्जिस्ट करता है तो एक पार्टी अगर एडवांटेज में और दूसरी नहीं, तो ये आपके स्पिरिट ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा है। देन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक, जनरल पब्लिक का जो है वो ट्रस्ट जो है आपके सिस्टम से उठ जाता है। फॉर एग्जांपल जब डिलेड जस्टिस है या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट है, तो वी हैव सीन कि जो जनरल पब्लिक है दे डू नॉट हैव मच ट्रस्ट इन आवर लीगल सिस्टम। तो इसकी वजह से, क्योंकि लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स इवेजन की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि लोग टैक्स इवेट करते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो अपना शेयर ऑफ टैक्स नहीं देते, तो जो एक कॉमन इंसान है वो ही इज ऑलवेज ऑफ द व्यू कि हम क्यों टैक्स दें, बिकॉज हमारा टैक्स तो जो है करप्शन में जा रहा है, ब्राइबरी में, एम्बेजलमेंट में जा रहा है, तो दे आर रिलक्टेंट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, बिकॉज उनको वो फेयर ट्रीटमेंट जो है वो लीगल सिस्टम की तरफ से नहीं मिल रहा। देन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, टैक्स इवेजन की वजह से आपकी इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होता है उस चीज से, या कि कोई भी इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं, तो तब भी आपके जो रेवेन्यू है, आपकी जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है टू कलेक्ट इट, वो जो है उस पे जो है अफेक्ट होता है डायरेक्ट। सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है, कि फॉर एग्जांपल जो लूप होल्स हैं वो रेगुलेशन को एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री, क्योंकि जो है लोगों को ट्रस्ट नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इमेज जाती है सोसाइटी को आपके लीगल सिस्टम की। आप, पीपल डू नॉट ट्रस्ट द लीगल एक्सपर्ट्स के, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि ये हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में जो है वो कामयाब नहीं। लीगल बैकलॉग्स और चैलेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट डिलेड जस्टिस, और या फिर एक टाइमली प्रोसेस जो हमारे लीगल सिस्टम का है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स जो हमारा प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसकी वजह से एक बैकलॉग ऑफ केसेस भी जो है वो काफी ज्यादा हमारे कंट्री में है, क्योंकि आपका लिटिगेशन के रिजल्ट रेशो उतना नहीं है जितना कि आपके जो है इनटेक ऑफ केसेस है। इसकी वजह से लोग जो है वो दे आर रिलक्टेंट कि आप अपने केसेस या अपने राइट्स को जो है वो, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स हुई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में है। उसके बाद डिमिनिश डिटरेंस होती है, कि क्योंकि जब ये वीकनेसेस लॉ में एग्जिस्ट करती हैं तो डिटरेंस जो है बहुत कम हो जाती है। क्रिमिनल्स को एक वो
दे आर एट एडवांटेज के उनको पता होता है कि हमें वी वॉन्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। तो this weaknesses, yeah, these loopholes in the law, they provide advantages for illegal or unethical behavior. अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं कि हम किस तरह जो है इनको एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह हम लूप होल्स को जो है हम टैकल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि आप लेजिस्लेटिव अपडेट्स रखें कि लॉ मेकर्स को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वी कैन, जो भी लीगल एक्सपर्ट्स स्कॉलर्स होते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन इस प्रोसेस में, दे कैन कंडक्ट थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ लॉज। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको रिव्यू करना है, उनको रेगुलरली रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो है उनकी इफेक्टिवनेस को कंटिन्यू रखा जा सके। क्योंकि अगर एक लॉ जो है वो नहीं उसको अपडेट रखा जाएगा तो ओवर द टाइम उसकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। We will continue after the azan. अरे अरे यार तो काम कर रहे हो बिल हो गई कब कम So we were talking about the strategies जो हम यूज कर सकते हैं for addressing loopholes. तो first फिर हमने कहा था कि हम legislative updates रख सकते हैं. How we can update the legislation is कि जो भी with the advancement of technology and with the changes in the societal norms, हम जो लॉ एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे कैन रेगुलरली रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज, दे कैन अपडेट द एग्जिस्टिंग लॉज. व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द अपडेट इज कि अगर जो है the existing laws do not pace up with the advancement of technology, तो over the time जो effectiveness या फिर जो deterrence of the law है वो खत्म होती जाएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के अमेंडमेंट्स या फिर जो भी अपडेट है वो विद चेंजिंग टाइम्स वो होती रहे. देन हम देयर इज अ dire need for clear and precise language of the legislation. जब ड्राफ्ट कर रहे होते हैं लेजिस्लेशन तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लॉ मेकर्स हैं दे शुड फोकस के एक क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज हो जो कि मिनिमाइज कर दे कि कोई पोटेंशियल लूप होल जो है वो क्रिएट ना हो. लॉ मेकर्स जो है दे शुड ट्राई कि वो थरली जो है वो एक
एग्जामिनेशन करें, ताकि जो वर्डिंग्स ऑफ आपके लॉ होती है, दे लीव अ लिटिल रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन अकर करती है। तो दे शुड वर्क ऑन इट कि जो वर्डिंग्स हैं वो क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसकी दैट विल क्रिएट room for interpretation, and that will reduce the chances of exploitation. Judicial precedent, जो courts हैं, they play a very important role in interpretation or law. तो there is a need कि एक consistent और well reasoned judicial decisions हों, जिसकी वजह से एक जो है we can say कि consistent legal precedent जो है वो exist करे, जो कि आपके जो intent of law है वो clarify करे। इसकी वजह से there will be a reduced potential for loopholes. देन आप कोलेबरेट कर सकते हो लॉ मेकर्स के साथ, कि इनपुट आप लीगल एक्सपर्ट्स हैं। एज आई हैव सेड बिफोर कि लीगल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयर्स हो गए, दे हैव अ वन टू वन इंटरेक्शन विद द पब्लिक, दे नो कि पब्लिक को क्या जो है मुश्किलात हैं या क्या उनके जो है ग्रीवेंसेस हैं। तो द कोलैबोरेशन विद लीगल एक्सपर्ट्स स्कॉलर्स जब ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, अमेंड कर रहे होते हैं लेजिस्लेशन, इट हेल्प्स द लॉ मेकर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअल द प्रॉब्लम इज, और कहाँ पे जो है हमें दे नीड टू वर्क ऑन which area. So this collaboration can obviously help to ensure that the law is comprehensive and effective. Public engagement and awareness is another strategy that can be used. Educating the public about existing loopholes and their potential consequences can create awareness. For example, if we talk about tax evasion, तो अगर public को उसके, if there are serious consequences, अगर जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको उस चीज की जो है सजा मिलेगी, तो पीपल विल नो के ओके दिस हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और एक डिटरेंस क्रिएट होगी। तो एजुकेटिंग द पब्लिक, creating awareness for in them, and gaining their support is very important to tackle with these loopholes, or to tackle with the problems that exist in the existing legal system. तो जब आप पब्लिक को एंगेज करते हो उनकी कंसल्टेशन, उनके फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, तो वो जो है इट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द लूपहोल्स। देन जो बात अगेन जो लीगल एजुकेशन है हमारी इस टाइम पर, उसमें जो है देयर इज डायर नीड फॉर चेंजेस इन दैट। वी नीड एक प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग जो है लॉ स्टूडेंट्स को, जो है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो के रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस ऑफ लॉ क्या है। तो नहीं अपनी व्याल है करी they should be provided how to talk to clients, and they should be provided legal writing workshops, for example mock trials, जिसकी वजह से उनको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल सकता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी जो है, जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस सच एज इंटर्नशिप या एक्सटर्नशिप्स होती हैं, क्लिनिकल प्रोग्राम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको कि हाउ लीगल प्रिंसिपल्स जो वो बुक्स में पढ़ रहे हैं, और जो जिनकी उनको एजुकेशन जो है वो लॉ स्कूल्स दे रहे हैं, उनको रियल लाइफ सिनेरियोज में हाउ डू दे अप्लाई देम। तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज एंड हाउ इट्स what is their practical implications. जो interdisciplinary approach है, that can also help the students to understand कि how law is connected with other fields, for example business, technology or other social sciences. तो this can foster critical thinking and problem solving technique. इसी तरह टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है आपके लीगल सिस्टम में, आपके लीगल एजुकेशन में भी, it will help the students to learn how to advance in the legal research, या how to stay updated with the legal advancement that take place in overall the world. और ये उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर द मॉडर्न लीगल वर्ल्डस्केप, जब वो एक ग्रेजुएट होकर एक रियल वर्ल्ड में आते हैं। और जो कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जब आप इनकरेज करते हो कि इवन आफ्टर दे कम इनटू लीगल फील्ड, तब भी वो कंटिन्यूसली अगर वो अडेप्ट करें हम टू न्यू चेंजेस इन द डेवलपमेंट्स, तो दैट कैन हेल्प देम इन एक्सेलिंग इन देयर लीगल फील्ड। अब हम बात करते हैं कि रिफॉर्म्स जो है पाकिस्तानी सिस्टम में, जो अगर हमने कुछ एग्जांपल्स हम इसकी पढ़ते हैं कि लूप होल्स को टैकल करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स जो आए हैं, उसमें हम वी विल
go through few examples. One of the is the Benami Transaction Prohibition Act in 2017. It is a very notable case study. इस law ने जो है implement किया था the issue, and it was an effort to tackle the issue of the hidden and undisclosed property ownership, जो कि काफी ज्यादा मेजर फाइनेंशियल सिस्टम में आपका लूप होल एग्जिस्ट करता था. The aim of this act was to identify and penalize individuals who held property under false names or used proxies to conceal their ownership. ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया इस एक्ट ने कि इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड सीज किया जाए बेनामी प्रॉपर्टीज को, इंश्योर किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में. इस रिफॉर्म के थ्रू जो है गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो जो ये लूप होल थी जिसमें लोग जो है लॉन्डर मनी के थ्रू आप प्रॉपर्टीज ले रहे थे, इसको जो है टैकल करने में काफी जो है इस एक्ट ने हेल्प की है. और इस एक्ट ने empowered किए अथॉरिटीज को कि दे टेक एक्शंस अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन बेनामी ट्रांजैक्शन, लीडिंग टू an accountable financial system. Another example is the tax reform package in 2019, जिसका मेन काम था कि टैक्सेशन सिस्टम को जो है उसमें जो लूपहोल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको एड्रेस करना. इस पे कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिफॉर्म था जिसमें आप एक टैक्स बेस को उन्होंने ब्रॉडन किया था, सिंप्लीफाई किया था टैक्स प्रोसीजर को, इनहांस किया था टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो है इट वाज एन एफर्ट टू क्लोज द लूपहोल्स और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा स्ट्रिक्टर जो है रेगुलेशन की, ताकि गवर्नमेंट जो है आपकी टैक्स रेवेन्यू जो है उनके इंक्रीज हो जाए और टैक्स एवेजन जो है वो कम हो सके, और ताकि एक फेयर जो है टैक्स सिस्टम एग्जिस्ट करे. द एग्जांपल इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिफॉर्म्स. पाकिस्तान ने जो है इन 2010 जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था और इसके सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स आई हैं जिसके थ्रू they have tried for an effort this is an effort to combat with the money laundering and terrorist financing. These reforms has enhanced regulating oversight, establishing reporting mechanism for money laundering and terrorist financing, and it has facilitated international corporations to prevent illicit financial activities. अब हमने बात की है about about the some loopholes that exist. There are other obviously, और क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हम किस तरह उसको एड्रेस कर सकते हैं. नाउ देयर इज ऑब्वियसली अ नीड फॉर रिफॉर्म. हमें एक फेयर और जस्ट सिस्टम चाहिए, लीगल सिस्टम चाहिए फॉर ऑल ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान. एक जो है देयर इज अ नीड के कोलैबोरेट किया जाए विद द लीगल प्रोफेशनल, विद द पॉलिसी मेकर्स एंड द सिविल सोसाइटी, ताकि एक सस्टेनेबल चेंज जो है वो अचीव कर सके हम. और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी हो सकता है जब एक कंटिन्यूस वैल्यूएशन और अडैप्शन होती रहे हमारे लीगल सिस्टम में. हमारा जो लीगल सिस्टम जो एक रिजिड और कॉम्प्लेक्स बन चुका है, unless and until it becomes flexible and it evaluates with and it adapts the changes of the society, और तभी जो है it can help the citizens of Pakistan. If there are any questions, do write them in the chat.